Hello, welcome to this lecture of class 10, chapter 3, web browser. This chapter is also important like other chapters. Web browsers are very much important for opening of web pages as well as websites. We can open websites using web browsers. We can open web pages with the help of web browsers, as well as we can easily open URL with the help of web browsers. So today's topic is web browsers. And the chapter name is web browsers, that is chapter 3. Web browsers are programs which is used to open web pages as well as websites. So web browsers are programs which is used to open web pages, as well as websites. So this is called web browsers. For examples of web browsers are Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Opera, etc. All these are examples of web browsers. Examples of web browsers are Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Opera, etc. So nowadays web browsers are very much important. Without web browsers we can't open a page as well as we can't open a website. Next we move on to the topic history list. Suppose when we opened a web browser and also we opened a website with the help of web browser, the list of all URL are listed in the history list. All the browser history, the websites which we have visited, that all are listed in the history. That is called history list. Suppose history lists are show the lists which we can visited the websites within last few days. So that is history list. We can set the default web browser in our computer. Suppose in our computer I have installed Google Chrome. So Google Chrome we can make the default web browser in our computer. Suppose we have visited a CBSE website, then we can easily download a web page.
we can easily download the files, we can easily download the web pages we can easily download, and these web pages which we have downloaded, that having extension .html, इस एक्सटेंशन से वेब पेज डाउनलोड हो जाएगा और हम लोग वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर सकते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, ताकि हमारे ब्राउजिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। यदि हमारे ब्राउज़र में कोई डिफ़िकल्टी आता है तो वी कैन ईजिली रिफ्रेश दी वेब पेजेस और वेबसाइट्स। रिफ्रेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म। रिफ्रेश का मतलब होता है, जैसे हमने एक वेबसाइट खोला, जैसे सीबीएसई का वेबसाइट, तो सीबीएसई का वेबसाइट नहीं ढंग से चल रहा है, यदि हम रिफ्रेश करेंगे वेब पेज को या वेबसाइट को, तो हमारा वेब पेज या वेबसाइट अच्छा से चलने लगेगा। तो रिफ्रेश बटन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। और रिफ्रेश हम लोग F5 प्रेस करके भी वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश का साइन भी बना हुआ है, रिफ्रेश का साइन बना हुआ है वेब पेज पे, उस पर क्लिक करके भी हम लोग वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, सो दैट आवर वेब पेज वर्क्स कन्वीनियंटली। We can change the text size of our web page. We can print the web pages with the help of web browser. We can download the web pages with the help of web browser. We can save the images with the help of web browser. We can open a window link of the web browser easily. To open a window link, we can simply right click and we have to click on open a new window, that is our new web browser will open. So this is a lecture for today's class about web browser and about chapter 3. Thank you very much, students.